So the first part of it, what does it say? That is, it is an act to provide protection of sexual harassment of women. सबसे पहला तो मुझे चाहिए था कि आप सब ये बताएं that this is only for women. The act in itself, the government is not saying that we are providing a law for protection of other people. The act is for sexual prevention of sexual harassment of women. तो सबसे पहली चीज आपको ये पकड़नी थी कि ये women के लिए है, ठीक है. Although it may seem very obvious, but as we move on later into classes, you will understand why I'm saying this, okay? So the first thing that is pointed out by the legislature is that it is protection of sexual harassment of women. Secondly, at workplace, okay? This is not a general law like the Indian Penal Code where sexual harassment anywhere is protected. This is for women and at workplace, okay? These are the 2 points. Next, what I'm sorry, I did not get the name of the lady who just spoke. It is for redressal, prevention and redressal of the complaints of sexual harassment. So the 3 things that you get out of the object is that you are protecting women, number 1, at workplace, number 2, and thirdly you are trying to prevent and redress. Prevent मतलब आप कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो आप उस कंप्लेंट को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, ये लॉ बताता है. Whereas sexual harassment results in, what does it result in? Legislature बता रही है कि fundamental rights violate होते हैं. एक औरत के पास या एक इंसान के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वालिटी होता है. आर्टिकल 14 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कभी खोलते हैं तो उसमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है. सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट का ऑब्जेक्ट बोलता है कि आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, आप एक औरत है, हम चाहते हैं कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. इस वजह से, और आपका इक्वालिटी का क्लॉज कभी भी वायलेट ना हो, आपको कभी भी डिफरेंशियली ट्रीट ना किया जाए बिकॉज यू आर ऑफ अ जेंडर, ओके. दैट इज व्हाई वी वांट टू प्रोटेक्ट दैट राइट एंड दिस इज फॉर प्रोटेक्शन. हम आपके लिए एक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है. राइट टू लाइफ है आपका, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, ये आर्टिकल 21 में बताया गया है. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, व्हाई? बिकॉज दिस इज एन एक्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन एट वर्क प्लेस. Women in India should not feel that they cannot go to a particular workplace because they are feeling unsafe there, correct? They have a right in the Indian constitution to practice anything that they like, right? I am a lawyer, I am free to practice in the court of law. I should not feel unsafe there. You are an HR manager, you should not feel unsafe to go and work in your organization, correct? So for that you need to be protected from certain things that may happen, might not happen. This is why the act is in this domain, okay? This is the object of the act. I'm not going to read the whole thing, but this is essentially why the act is into picture. आपके लिए first 2 lines ही important है.